Welcome to the FutureTech Spotlight online learning platform. Now I am taking your subject that the code is MCA 22, AI and machine learning. Okay. So this is what you are the course structure you are having, and for the subject you are having 3 credit points for AIML theory. Okay. Now in AIML, you are having total 7 modules. Okay. So the first module is basic introduction of artificial intelligence, then search strategies, artificial neural network. Then as your subject itself says, it is divided into 2 parts, that is artificial intelligence and machine learning. So from module 4 to 7, you are having machine learning concepts, and in this concept, introduction to machine learning, then forecasting and learning theory, where you will learn all the supervised and unsupervised algorithm again. Then kernel machines and assemble methods, the different algorithms we are having in this also. And dimensionality reduction, this is basically a practical implementation of dimensionality reduction through principal component analysis. So that we will learn in module 7. So total 40 hours theory topics are there from module 1 to 7. Clear? Now in this total AIML course, the course objective is to understand the AI concept. Okay, how to get the technique for problem solving, whatever the problem we are having in the real environment, how we can solve through smart system. Okay, so that is also we will learn, and then we understand the search strategy and neural network, and again machine learning fundamentals and other algorithms. So this is what the objective of this course. Okay. Now, as I told you, if you have also observed, your question paper is having CO1, CO2, CO3, right? So that CO is nothing but a course outcomes, and based on that, we will calculate your topic-wise understanding in the percentage. Okay, end of the day. ठीक है? So यहाँ पे हमारा course 4 course outcomes हैं. The first is outcome is to interpret AI concept. Then second is to apply the technique, and then the third one is to apply the fundamental MI algorithms, and the fourth one is how we can again improve MI results. Okay, so whatever the result we are getting through machine learning algorithms, how we can get better results. Okay, using heuristic algorithms, or you can say modern algorithms. Okay, so that we will learn, and we will get the this course outcomes. Okay, so these are the 4 course outcomes we are having. Now if we talk about the reference book, these are the reference book you require to refer. Okay, जो आज हम first unit start कर रहे हैं, that unit I took from second reference book. Okay, रुशल का जो reference book है वहां से मैंने पूरा लिया है content. Okay, so meanwhile, I will also tell you which topic and which unit you require to refer from which reference book. So today itself, I will upload this reference book from which I am taking this unit 1. Okay, so these are all reference book. Now, whoever students are interested for practical implementation of AI, okay, so the NPTEL courses are also going on for AI. Okay, so these are the course we are having for AI. Okay, so NPTEL course है course in AI by Deepak Khemani. Okay, and IIT Madras course is also going on, that is Introduction to Machine Learning. Okay, and a tutorial point machine learning with Python course is also there. So these are the 3 web reference we are having for practical implementation of AI, where you will get different assignments and problem statements through which you will get the idea how to solve AI problems. Okay, so these are all reference web references. Okay, so now we will start with the first chapter, that is Introduction to Artificial Intelligence. In this particular chapter, we will cover this topics.
the topics are AI, application of AI problems, problem formulation, intelligent agent, type of intelligent agent, environment, ठीक है, then environment representation for agent, architecture, reasoning and logic. These are the proposition logic and first order logic. Based on that, the whole AI system build. Okay, so that we will learn and how to infer that logic. Okay, so these are the main basics of AI. तो जब भी हम AI पढ़ना शुरू करते हैं तो जब तक how this AI system understanding the things, वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब हम उसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है. तो और वो कैसे समझ में आएगा? through how this exact system is getting your input. Now input is in the form of natural language processing. Okay, natural language means human being जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही AI system है. So now we will see how what is AI and you will get to know. Okay, so these are the modules these are the module topics we are having under this. Okay, so now we will learn what is AI. So किसी को भी मतलब कुछ आइडिया है ब्रीफ में कि what is AI or any type of AI system they come across? Yes, anyone? Yeah, any students? Do you have any knowledge of any AI system और कोई AI system को use किया हो, ऐसा कुछ पता है? हाँ, अगर मैं बोलूं आपको कि आप डेली बेसिस पे एआई सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, देन आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, गूगल असिस्टेंट. वेरी गुड, गूगल असिस्टेंट. ओके, Alexa, very good. So these are all intelligent systems where they are having you can think about the database they are having. Okay, because any type of information you want to ask, the system is ready to give answer. Okay, so now you can think about the database. It's a kind of, you can say, if you are talking about Google Assistant, तो database पेटाबाइट से भी ज्यादा का होगा मुझे लगता है, ठीक है. और then also in fraction of second it is giving you answer. Okay, so now you think about the system. Okay, so this is what AI system we are seeing all the time around us. Even if I am not wrong, अगर आप YouTube की बात करते हो तो normal YouTube is also using AI system. How? Can you tell me? YouTube कैसे यूज कर रहा है AI system को? Captions. Captions. Keywords. Oh, okay. Yeah. Suggestions. Yes. Okay, so they know what type of liking you are having, what you have disliked. Okay, what is your domain? Okay, everything they are getting this information through your inputs, and based on that they are giving the future suggestions. Okay, these are the video you require to see. Okay, so because as and when I am with this AI subject, I am also seeing so many videos of AI, and now I am getting all the time notification for new AI videos. Okay, so now this is what they are actually ये suggestions जो आ रहे हैं उसके behind क्या है, that all machine learning, deep learning, and then you are getting all the details. Okay, but this is also one intelligent system, you can say. Okay, even Facebook, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो वहां पे जो हमें, या फिर कोई भी वेबसाइट पे जो गूगल एडसेंस है, दैट इज Google आल्सो Maps. यस, गूगल मैप्स, दैट इज आल्सो, इफ यू नो, अगर आपने डिटेल में देखा होगा तो अगर आपने एक महीने में जितना भी ट्रैवल किया है, ठीक है, अगर अलग अलग जगह पे, उसकी पूरी समरी आपको एंड ऑफ द मंथ में आती है जीमेल पे. अगर आपका जीपीएस ऑन है, ठीक है, किसी ने किया है ये एक्सपीरियंस? हाँ, Yes, अगर ma'am. यस, आपने अगर कोई रेस्टोरेंट में चेक इन किया है, अगर आप कोई म्यूजिक सिस्टम मतलब स्टोर में गए हो, या कोई ऐसे स्टोर में कि जहाँ पे आपको चेक इन मिलता है, मतलब वहां पे वो लोग कैप्चर कर रहे हैं कि ओके दिस इज द प्लेस और लोकेशन के जहाँ पे आपने
एंटर किया है, ठीक है, तो वो जितने भी लोकेशंस गूगल मैप पे अभी एग्जिस्ट है, वहां जहां जहां पे आप गए होंगे वो सारी डिटेल आपको जीमेल पे मिलेगी. सो नाउ in a way this Google is also capturing your all activities, you can say, or that is also and based on that it will give you all the suggestions. Okay, so this is what current environment we are having around us. Okay, and all things are intelligent, but that it is not that much intelligent like human being. Okay, so how we can go for the strong AI, that we will see. Okay, so if we talk about AI, the definition is what? It is a branch of computer science by which we can create intelligent machine which can behave like a human, thinks like human, and able to make decisions. Now this is very, very important. Okay, behave like human. Now act like human means what? Exactly like human are not rational. Is it true or right, true or false? Humans are rational or not? Rational means all the time correct or behave correctly. Okay, so that is not possible for human, right? So if we are talking about any smart system and if we are applying the algorithm always based on the correct decision, right? But it's not like that. Human can take wrong decisions. Okay, so now if we are talking about a system के जो human की तरह ही behave करे, उसकी तरह ही सोचे, okay, तो अगर हम सोचने की बात कर रहे हैं तो it is not only logical thinking. Sometimes human thinking और human behavior जो है उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ठीक है, समटाइम्स ह्यूमंस आर इमोशनल आल्सो. ओके, सो उसकी तरह सोचना और उसकी तरह डिसीजन लेना, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू डिजाइन दैट टाइप ऑफ सिस्टम. ओके, एंड नाउ आवर साइंस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट सिस्टम. Now, have you heard about the first AI robot? किसी ने नाम सुना है AI robot का? It's Sophia. Sophia. Yes. Sophia का interview किसी ने देखा था क्या? I'll give you that video link also. Please see that interview कि जिसमें सोफिया ने इतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सारे, जस्ट लाइक सम ह्यूमन बीइंग इज टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड टेकिंग सम, मतलब कोई वो टॉक दे रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसने बात की है और सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं. ठीक है, सो इट्स अगर आप वहां पे ऐसा कर दो कि अगर वन पर्सन इज नॉट सीइंग के हु इज द स्पीकर, ओके, तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि अगर दैट पर्सन इज रोबोट और दैट पर्सन इज ह्यूमन बीइंग. Okay, so that is there because now again the AI system is having that encyclopedia, पूरा Google है उसके अंदर. कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर वो Google के थ्रू इंटरनली ही रीड कर सकता है. ठीक है, तो करेक्टनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी जो ह्यूमन के अंदर नहीं है. सो इट इज समवेयर यू कैन से वेरी रिस्की ऑल्सो. ठीक है, तो या थैंक यू अक्षिता ने वो वीडियो आई थिंक भेजा है. ठीक है, तो ऑल प्लीज सी दिस वीडियो व्हेनेवर यू आर हैविंग टाइम. हाउ दिस एआई ऑल स्टार्टेड. ठीक है, कौन बोल सकता है कि कितने साल में ये स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईयर में ये स्टार्ट हो सकता है एआई का कॉन्सेप्ट. सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं मैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया, पर वो कॉन्सेप्ट ऐसा सोचना कि ह्यूमन कैन थिंक. ठीक है, तो और लॉजिकली वी कैन कम टू द कंक्लूजन थ्रू सम सेट ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग. ओके, ये कब शुरू हुआ होगा? 80s में या फिर 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, या कोई गैस कर सकता है यहाँ पे? यस, एनीवन? ओके, नाउ ऐसा सोचना कि कोई स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कोई डिसीजन पे आ सकते हैं क्या, या ह्यूमन इस तरीके से थिंक करके ये कंक्लूजन पे पहुंच सकता है, ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट. ठीक है, हमको सबसे पहले कहां मिल रहा है पता है? 5000 BC. Now you think about this. 5000 BC गौतम मुनि ने रामायण में ये पूरा लिखा हुआ है. With using 5 logic statement, you can come to the conclusion. Okay, or it's a kind of you can say proof we are having in the Ramayana that these are the things
if we go through this particular statement, we can come to the conclusion. Okay, so ये हमारा जो documentation है वो कहाँ पे है? 5000 BC. Then after उसके पहले हम लोग थोड़ी बात करें तो 300 BC में एरिस्टोटल, दैट ग्रीक साइंटिस्ट, उसने पूरा लॉजिकल सिलोजिज्म और लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए कि इफ वी थिंक लाइक दिस और या सिस्टम थिंक लाइक दिस देन वी कम टू द कंक्लूजन. ओके, सो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, बट this AI word came in the picture in 1955-56, and that particular word given by this John McAfee. Okay, John McAfee जो है जिन्होंने AI या artificial intelligence वर्ड दिया था. So what is artificial intelligence? उनके words में वो definition क्या है? The definition is, it is the science and engineering of making intelligent machine, especially in intelligent computer program. It is related to the similar task of using computer to understand human intelligence. But AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable. Of course, biologically we cannot observe that system, what human intelligence can do in AI system, but the result we can get through this AI system, just like human intelligence. Okay, so that is what the definition given by John McCarthy, and that from that point onwards, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में ये दिया था वर्ड, उसके बाद से ये जो पूरा डोमेन है स्टडी का, हाँ, एआई स्टडी का जो पूरा डोमेन है, उस सिस्टम को एआई सिस्टम जो है वो हमने बोलना शुरू किया. ठीक है, बिफोर दैट देयर इज नो term like artificial intelligence. Now we will see what is this term itself says, but before that, some AI system around us, as we have already discussed, Siri in 2011, Cortana is again a kind of virtual assistant through Microsoft, given in 2014, and the same Amazon gave Alexa in 2014. And in 2016, we got Google Assistant. Okay, so these are the smart system or intelligent system we are having, in which the AI system incorporate with machine learning, deep learning, natural language processing, knowledge-based system, cognitive science. ये सारा मिलाकर ये system बना हुआ है, and that is what the AI system is. Okay, so AI is, you can say, it's a combination of, there are so many other domains. Okay, and it is always based on what type of system you want to design, and उसके हिसाब से ये AI के type में जाता है. ठीक है, तो AI type कौन से हैं, that also we will see, but these are the rough scenario के ये these are इस type की systems जो है वो AI system है. ठीक है, so what is AI? हमने अभी बात की, डेफिनेशन भी देखा कि AI is concerned with the design of intelligence in an artificial device, and the term given by John McCarthy in 1956. Now, in this particular AI, we are having two terminology or two ideas, you can say, that is intelligent and artificial device. Now, what is intelligence? कोई बता सकता है intelligence क्या है? In layman language, what is intelligence? Yes, anyone? See, if you are getting marks 80 out of 80, that is not intelligence. Okay. So what is intelligence? Yes, anyone? Decision making quality. Yes, very good. Decision making quality. Achha. Problem solving Very ability. good. Problem solving ability. Nisha, ideas. Yes, of course. Presence of mind. Presence of mind. Okay, very good. So intelligence क्या है वो हम देखते हैं. It related to task involving higher mental processes. Okay, so when we are having some complex problem to solve, that time that intelligence come in the picture, right? So mostly when you are talking about, you are calculating probability and statistics, that time your intelligence required, right? Okay, so that is what the intelligence. For example, creativity, जैसे निशा ने बताया,
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, language processing, learning, classification, these are all intelligence. Okay, so it's a kind of computation part, you can say. Okay, and it is always different from person to person, you can say. Okay, it is different in human also, it different in animal also. Yes, animal is also having this ability. Okay, even you don't believe, but plant is also having some type of intelligence. Yes, that is proved. Okay, so all the you can say living creatures are having this ability, but they are having in different percentage, you can say. Okay, so humans are always better than animals, of course. So humans are having more intelligence. किसी को पता है कि इंटेलिजेंसी मेजर करने के लिए कुछ है क्या? Yes, anyone? Can we measure our intelligence? Sorry. Yes, of course. Yeah, ma'am. By giving the test on some other problem solving. Yes. Like this. या कौन सी टेस्ट है वो? किसी ने अपीयर किया है ऐसी टेस्ट में? IQ test. Yes, IQ test. Okay, so through IQ test, what it means, what each and every person is having that ability to get or to reach that IQ level, but we are not using our brain, you know that. Okay, why we are not using our brain? Because we are very monotonous, first of all. Okay, we are doing most of the thing mechanically. ठीक है, और इसकी वजह से जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है. Why? Because there are two hemisphere in our brain, left and right. Okay, and most of the time हम कौन सा वाला ब्रेन का पार्ट यूज करते हैं, किसी को पता है? No, ma'am. Yes, Left side. लेफ्ट साइड. Left one? यस, लेफ्ट वन. ठीक है, राइट वाला हम लोग बहुत कम यूज करते हैं. ठीक है, और राइट वाले को अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है यूज करने के लिए. ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. बट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग और व्हाई वी आर नॉट रीचिंग दैट IQ लेवल? बिकॉज वी आर नॉट हमारा जो ब्रेन है उसको हम उस तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव ओनली वन आंसर, दैट वी डोंट हैव टाइम, we are very busy. Okay, but the thing is that yes, we can also change our IQ level. We can also see growth is always there. If reader is there, then reader is always evolve. Okay, अगर writer is there तो writer भी evolve होता है. अगर वो same book आप 10वीं बार पढ़ोगे तो आप अलग मीनिंग से पढ़ते हो. ठीक है ना? तो same way यहाँ पे भी जो है वो growth is always there. Okay, बट वो हम कितना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इंटेलिजेंसी इज देयर इन द ह्यूमन बीइंग. ओके, ऑफ कोर्स बेटर देन एनिमल्स, बेटर देन प्लांट, बट हम इंटेलिजेंसी ज्यादातर कब यूज करते हैं? जब हम कुछ कंप्यूटेशनल थिंग्स करते हैं, दैट्स इट. उस टाइम पे हम उस इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं. ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या होता है? ठीक है, so behavior means perceiving the environment. Now what is perceiving the environment? So now in human system we are having 5 senses, right? Or through these 5 senses we get to know about our environment, and based on that, based on the perceptions, we take the decision. Okay, जैसे आंखों को पता चला है कि अभी रेन हो रही है, कानों में सुनाई भी दे रहा है कि बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे? बाहर जाने से पहले छाता लेंगे या रेनकोट पहनेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट द सिंपल बिहेवियर. ओके, बट हाउ वी आर बिहेविंग like this? Because we have that 5 senses. Okay, and whenever we create this type of AI system, that AI system should have this 5 senses. Okay, of course for that they will use some sophisticated system to get this 5 sense, but the system should have this, then only it become intelligent system. Okay, then intelligent behavior acting in complex environment. Okay, now this particular thing is different for person to person, of course.
कोई कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में, और सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट भी पर्सन के लिए अलग होगा, किसी के लिए वो कॉम्प्लेक्स होगा तो किसी के लिए वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। बट अगर हम इंटेलिजेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसको जिस हिसाब से एल्गोरिदम फीड किया है वैसे ही काम करेगा वो, ठीक है ना। उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। So, and that's why it is very difficult to build this type of system, just like human being. Okay. Then learning and understanding from experience. The human can do, and now machine can also do. Okay. Machine can also learn through and experiences. Now, have you heard about the Tesla car? Yes. Anyone? Yes, sir. Yeah. So, what is that? Automatic car. Automatic. Very good. Driverless car. Okay. And more than 50,000 cars on road nowadays is having this facility, you know that, in abroad. Okay, so now this type of car, Tesla car, is again a kind of AI system, right, where there is no human interference required, and whenever any type of decision required to take, that is taken by system itself. Okay, so आपको कितना रेस बढ़ाना है, कहाँ पे ब्रेक देना है, कहाँ पे डाइवर्जन है, कहाँ पे आपको क्रॉस करना है, कहाँ पे रुकना है, everything done by the system, right? But this Tesla system is again in the experiment, where they are going in this learning and understanding from experience phase. Okay, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर टेस्ला कार जो है वो अगर जा रही है रोड पे और कहीं पे ट्रैफिक जाम, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ट्रैफिक जाम है, देन दिस कार विल broadcast this particular situation to other cars. Okay, the jam is here in this location, so other car may take diversion or take another route to reach the destination. Clear? So that is what learning from the behavior, learning from the environment. Okay, so it's like normal human tendency also there. Okay, कि यहाँ पे कहीं पे खड्डे में 2 बार गिर जाओगे तो तीसरी बार तुम ध्यान रखोगे ना, the same way the system is also learning from the experience. Okay, so that is also going on. Then reasoning to solve problem and discover hidden knowledge. Okay, so sometimes hidden knowledge is there in the problem, and we solve the problem through that. So that is also there. Then responding in new situation by applying knowledge successfully. So whatever the past knowledge we are having, based on past knowledge, we respond the new situation. Okay, so new situations coming for the first time, but you may come across with that situation in some reading, और हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी सेम सिचुएशन हुई हो, उसका नॉलेज है आपको, तो फिर आप उसी तरीके से उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। द same can be implemented in the smart system also. Okay, then think abstractly and using analogies. Okay, so abstract thinking कैसे कर सकते हैं? Now again there are so many algorithms we are having for this. Okay, for us it is okay, but for smart system it is very, very important. And communication, just communication is again a kind of intelligent behavior nowadays. Okay, so these are the intelligent behavior. What is the another term? So see, in a definition we have 2 terms, that is intelligence and artificial device. So intelligence क्या है वो हमें समझ में आया. Now we will see what is artificial device. Artificial device, the term itself says man-made device. Okay, so device should have the property of intelligence as human being. It act and think like a human. Computer with this high intellectual processing capability like human can be considered artificial device. Okay, so it means what? It can imitate the human thoughts. Is it possible to imitate human thoughts? Okay, so still we have not reached to that point. Okay, because currently we are working on weak AI device only, and if exactly we come across with this type of system where the system imitate the human being
exactly what human being can think, the system can think, then that is called strong AI. Okay, so that particular milestone we have not achieved currently. Okay, so whenever we are talking about AI, so AI is not a product, it's not a system, but it's a study of the computation that make it possible to perceive, reason, and act like a human. Okay, so this is just a, you can say, study of this particular thing. So now if we talk about the AI as a whole, okay, then only artificial intelligence will not work. Artificial intelligence is having the other domain, and using this domain, one smart system we can develop. Okay, so the system, if we are talking about the, like just like Google Assistant, suppose, ठीक है, अगर हम Google Assistant की बात करते हैं तो Google Assistant में, so first of all, that AI is using natural language processing, right? Because whatever the data we are giving to that system, it is in the form of human language. Okay, so the system has to interpret that language. Now, for the same question, suppose 5 लोग same question पूछ रहे हैं, तो पांचों का फॉर्मेशन अलग होगा क्वेश्चन का, ठीक है ना? सब अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, राइट? सो उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन आफ्टर, of course, knowledge, already contained knowledge is there in the system. Based on that, it is giving answer, right? Now, the subdomain of this AI is machine learning. Means whatever the question you are asking, based on that, based on the past history data, that AI system is computing some machine learning algorithms and coming to the conclusion, this is the answer. Okay, so that is what the machine learning is. Okay, and then after, and yes, again it will adding the knowledge in the system. Okay, so machine learning is not just computing the data and giving you the answer, but it is also increasing the knowledge. Okay, कि next time अगर आता है तो हमें यही आंसर देना है, ठीक है? That way. Then again, neural network is also there in the system, because sometimes what happen, may be possible that data is not in the system. जो यूजर ने पूछा है गूगल असिस्टेंट को, वो डेटा है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या करना है? ठीक है, सो नाउ दिस टू विल कम इन द पिक्चर, 3 इनफैक्ट. नॉलेज तो उसको है नहीं अभी उस चीज का, ठीक है? तो कॉग्निटिव सिस्टम मीन्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस थिंकिंग. ओके, सो ह्यूमन जिस हिसाब से सोचता है, क्या वैसा सोच के कोई आंसर दे सकते हैं, कॉमन सेंस का कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है? या और न्यूरल नेटवर्क इज अगेन kind of a pattern which we are having in our brain, and based on that, जैसे brain think करता है उस हिसाब से think करके वो आंसर दे सकता है, ठीक है? So that this too will come in the picture when you don't have any data, past data for the question. Okay, then after deep learning, what is deep learning? So now the artificial intelligence is having a section is machine learning, and the machine learning subsection is deep learning. Okay, so where you required a visualization, where you required a more analytical problem solution. Okay, then sometimes you are having system like a chatbot. Chatbot is nothing but a kind of a WhatsApp. Okay, so WhatsApp में जैसे आप चैटिंग करते हो, क्या उस तरीके से आप सिस्टम के साथ चैटिंग कर सकते हो? इस तरीके की चैटिंग के सामने आपको पता ही नहीं चले कि सामने मशीन है या कोई ह्यूमन बीइंग है. सो दैट इज व्हाट द चैटबॉट. ठीक है, सो ये सारी सिस्टम्स जो है वो एआई को बनाती है, ठीक है? इवन रोबोटिक्स, ऑफ कोर्स, हार्डवेयर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस. सो दिस आर ऑल different domains incorporate together to make one smart system. Okay, so only AI बोलने से काम नहीं चलेगा. There are so many domain, you can say, involved in that particular system. Okay, so there are so many definitions available on internet. AI की बहुत ज़्यादा definitions available है,
बट अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन नेचुरल लैंग्वेज, medical diagnosis. Nowadays people are going for the telemedicine. You know what is telemedicine, students? Hello, anyone know about telemedicine, students? No, ma'am. Telemedicine means virtually patient and doctors are there, and you are not physically present with a doctor, but still you diagnose correctly, okay, through the system. Okay, that is what the telemedicine is. So due to COVID pandemic, the doctors are also very much in फियर कि भाई कोई स्टूडेंट कोई पेशेंट आ जाएगा तो हमको भी कोरोना हो सकता है, ऐसा होता है ऑफ कोर्स. तो उसके लिए अपोलो हॉस्पिटल इज द फर्स्ट हॉस्पिटल who has successfully established telemedicine centers, and through these centers patient don't have to go to any physically go to doctor, but virtually patient जो है वो किसी भी टाइप का डिजीज है उसका आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. अब वहां पे फिजिकली डॉक्टर के भी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हैं उसको, रिपोर्ट का जो भी डायग्नोस होगा रिपोर्ट से वो भी आपको वहां पे आ जाएगा कि भाई दिस आर द थिंग्स रिपोर्ट इज सेइंग. ओके, उसका क्या कंक्लूजन है, क्या मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्या फ्यूचर रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. ओके, so that is there. Okay, so that is what the telemedicine science totally, and of course AI is the main factor for this. Okay, then circuit design, there are so many things now automated. So circuit design is again one type of AI system. अगर आपने बड़े बड़े अगर IT सेक्टर या कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसमें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो AC का सिस्टम होता है वो पूरा कंप्यूटराइज होता है. if the temperature go to some particular point, then automatically उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह का AC जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल द स्मार्ट सिस्टम्स. ओके, देन सेल्फ adaptation. ओके, अडेप्टिंग द सिस्टम, देन रीजनिंग, चेस प्लेइंग, ठीक है, वो भी एक AI सिस्टम है. Proving maths theory, that is also AI system. So these are all you can say problem solving algorithms, okay, through AI. ठीक है. अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जितनी भी डेफिनेशन इंटरनेट पे है वो सारी डेफिनेशंस के बाद हम जब कंक्लूजन पे आते हैं तो वो हमें ये बात बताते हैं कि जो भी सिस्टम ये 4 चीजों को बताता है वो AI सिस्टम. सॉरी, तो वो 4 क्या चीज है? एक्ट लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमन, एक्ट और थिंक रैशनली. रैशनली का मतलब होता है लॉजिकली, करेक्टली, ठीक है. तो ये अगर स्टेप्स अगर फॉलो होते हैं तो वो जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा? AI सिस्टम, ठीक है. सो द 4 व्यूज, थिंक लाइक ह्यूमन, उसके ऊपर पहले जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं हम एक्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है. नाउ एक्ट लाइक ह्यूमन में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पर्सन था एलन ट्यूरिंग. द फुल नेम इज एलन एम ट्यूरिंग. इन 1950 he has written one research paper. The research paper title was Can Machine Think? Okay, so first time, उससे पहले AI का जो AI के नाम से नहीं पर इंटेलिजेंट सिस्टम से कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है साइंटिस्ट का, सो 1945 और 1940 और 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसके थ्रू जर्मन, हाउ टू इंटरप्रेट द जर्मन डिफेंस एकेडमी, जो है जर्मन डिफेंस एकेडमी थी, उसका कम्युनिकेशन कैसे हैक करना, ठीक है, वो सिस्टम के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है. सो दैट वाज डॉक्यूमेंटेड. बट एग्जैक्टली मशीन, can machine think? This is what the base of all the AI
you can say definitions. Okay, so that given by A.M. Turing in 1950. Okay, and the conference journal was Computing Machinery and Intelligence. Okay, now what he has actually done in the research, that if the system is called AI system, when suppose the now one human being is talking with some person, okay, in telecommunication, in this telecommunication, if the person not identify exactly the other person is exactly a human being or a computer, then the system is, that particular system is called AI system. Okay, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन जो है वो किसी से बात कर रहा है, ठीक है, और वो बात करने पे उसको पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला जो है वो ह्यूमन है या फिर वो कंप्यूटर है, ठीक है. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर गेम व्हाट दिस AM Turing is about to prove, the person is about to prove that if the system act like human, then we can say that this is the AI system, ठीक है. So that is what the acting human. Okay, and the test is called sorry, the test is called Turing test. Okay, इस ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने के लिए बहुत सारे साल लग गए. अब हम हिस्ट्री में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये ट्यूरिंग टेस्ट कब पास हुआ, बट द थियरी गिवन बाय द एलएम ट्यूरिंग दैट if this is the situation, then the system is AI system. Okay, so that was all theoretical. Okay, there is no computerized system for this. Okay, but the theoretical thinking is also very very important, कि ये पूरा उस डोमेन में जाती है जहाँ पे AI है, ठीक है. Then the second is thinking rationally. Now thinking humanly हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, because that is not at all possible still, ठीक है. because मशीन को हम एक एल्गोरिथम दे सकते हैं, मशीन को हम ये सोचने के लिए दे सकते हैं कि if A is there, B is there, then C is there, ठीक है. but for human being A है, B है, तो कभी C नहीं भी होगा, ठीक है. so that is all depend on the mood. Okay, sometimes emotions are there, sometimes environment is like that. Okay, so maybe possible in the same situation that human behave differently, that is possible. Okay, so that's why we directly come to the point thinking rationally, that is law of thought. Okay, so क्या हम thought process जो भी है उसको हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं क्या, ठीक है. तो जैसे मैंने बात किया था कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल gave the first 3-step logic syllogism. Okay, and through that he concluded that okay, if the person think like this, the conclusion is this or decision is this. Okay, ये 3 steps क्या है वो भी हम देखेंगे जब हम प्रपोजिशन लॉजिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ये 3 लॉजिक्स क्या है, ठीक है, और इसके बेस पे हम कंक्लूजन पे कैसे आ रहे हैं, or how we can feed this information to the computer. Okay, so that we will see. But whatever the data Aristotle got, okay, and whatever based on whatever the data, the Greek philosopher come to this particular statement that came from this Indian philosophy, and the Indian philosophy gave 5-step inference in 5000 year BC. Okay, 5000 साल पहले ही बोल दिया था कि भाई ये 5 स्टेप्स है, ये स्टेप्स करने पे ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है. तो वो हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है, और उसके बेस पे ही एरिस्टोटल ने ये 3 स्टेप्स का सिलोजिज्म दिया है, ठीक है. ये 5 स्टेप भी क्या है, दैट वी विल सी in detail in proposition logic, although it is not there in your syllabus, but it is very interesting to see. Okay, but still if we talk about this type of thing, law of thought अगर हम define भी करते हैं तो भी problem क्या है, most intelligent behavior does not rely on logical debates. Okay, ऐसा नहीं है कि logical debates के ऊपर ही हमारे सारे conclusion होते हैं. Again, intelligent behavior means how human think, ठीक है, क्योंकि AI सिस्टम ही पूरा का पूरा क्या है, ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है. इसलिए हमें वैसे ही सोचना पड़ेगा कि कैसे
ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे सोचता है, कैसे थिंक करता है, कैसे बिहेव करता है, वैसा हमें मशीन बनाना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द थिंकिंग रैशनली, ठीक है। हम रैशनली थिंकिंग पे ही जा सकते हैं, थिंक ह्यूमनली पे नहीं जा सकते, ठीक है। वो क्यों नहीं जा सकते आपको पता चला, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने ये 4 में से हमने 2 व्यू देखे, एक्ट लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक रैशनली, थिंक रैशनली एंड एक्ट रैशनली। अगर हम थिंकिंग रैशनली करेंगे तो एक्ट भी रैशनली कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ इन दिस रैशनल थिंकिंग, डू वी थिंक इन द टर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स? नहीं, कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई हमेशा ट्रू और फॉल्स के डायरेक्शन में ही सोचें। हम कभी भी ऐसा भी नहीं सोचते कि हर बार हम डिटर्मिनिस्टिक की तरह या फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम की तरह सोचें, ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि कितना परसेंट चांस है कि मैं 12 बजे खाना खाऊंगा, कितना परसेंट चांस है कि मैं अभी इतने बड़े, ऐसा नहीं सोचते हम लोग, ठीक है। we are always realistic, you can say, and for realistic thinkings, our thinkings are always deterministic. Deterministic और probabilistic में क्या difference है? Deterministic means the 100% chance that the thing event will occur, and probabilistic means the probability of chance that the event will occur, okay. And we always think deterministic, we always think that we are immortal, ठीक है। हम कभी मरने ही नहीं वाले हैं, उस हिसाब से ही सोचकर हम सारे काम करते हैं, है ना, ठीक है। बट वी रिक्वायर्ड टू थिंक रैशनली समटाइम, ठीक है। वी रिक्वायर्ड टू थिंक रैशनली, करेक्टली, लॉजिकली, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है गेट मशीन्स टू डू व्हाट ह्यूमन डू बट मशीन्स कांट, ठीक है। मशीन्स कर ही नहीं सकते वो काम, हमें करवाना है मशीन से जो ह्यूमन करते हैं, ठीक है। सो इस पे हम लोग स्टॉप होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री के अंदर पे, कैसे ये पूरा डोमेन जो है वो इवॉल्व हुआ एंड हाउ वी केम इन द करंट माइलस्टोन, ओके। Thank you, everyone.